नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदाब अर्ज है। आई एम डॉक्टर संजय कालरा, योर फ्रेंडली एंड फेमिलियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर केके's मेड टॉक्स, फार्मा टॉक्स विद डॉक्टर संजय कालरा। आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 867th 867वां एपिसोड है और फार्मा टॉक्स की ये 5th एपिसोड है। वी हैव किक स्टार्टेड अ स्पेशल सीरीज कॉल्ड फार्मा टॉक्स, जिसमें हम गेस्ट से बात करते हैं जो इंडस्ट्री से भी होते हैं और मेडिकल प्रोफेशन से भी। But today is a very special day because there's a special pilgrimage that is going to start next month, and we'll be talking about that. First, let's see what our headlines are. India is now being called the global pharmacy, the pharmacy of the world, and our industry is playing a pivotal role in improving health outcomes worldwide. We are a dependable supplier of affordable and high quality drugs, says Union Health Minister Mansukh Mandaviya. The Indian pharma industry now includes 3,000 plus drug companies, 10,500 manufacturing units, and it's projected to reach a value of 130 billion by the year 2030. We've provided 60% of the global vaccine supply and 20 to 22% of generic exports for the world. And the Uttar Pradesh government plans to take its share of the Indian pharma market up to 10% using various incentives, and also after creating a pharmaceutical research and innovation institute in Lucknow. अगर यूपी की बात कर रहे हैं तो लेट्स सी आवर टॉपिक फॉर टुडे. हमारा आज का टॉपिक है हज एंड हेल्थ, हज यात्रा और सेहत. एंड इसके बारे में जानना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू लर्न मोर एंड आई नो दैट एवरीबॉडी हु इज लॉग्ड इन, सब लोग जो आज हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब इसके बारे में सीखना चाहते हैं. कई हज पे जाना चाहते हैं, इस साल जाएंगे. कईयों को ऊपर वाला अगले साल या उससे अगले साल मौका देगा जाने का. मगर अपनी सेहत बनाए रखना जरूरी है, हज से पहले भी, हज के दौरान भी और हज के बाद भी. तो इसके लिए एक्सपर्ट देखते हैं और सबसे पहले अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं यूपी से, प्रोफेसर आजम हसीन. वार्म वेलकम सर. Thank you, Dr. Kalra. Welcome, Dr. Saab. Professor Azam Haseen is a distinguished academic, a prominent field in the field of education, and he is currently head of department of the Department of CTVS, Cardiothoracic Vascular Surgery, at AMU, Aligarh Muslim University, Aligarh. हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी हैं आज. A warm welcome to Mr. Alireza Doctor. Warm welcome, Mr. Alireza. Good evening, sir. Good evening. Mr. Ali is a seasoned marketing professional with now almost 1.5 decades of experience. Marketing manager at USV Private Limited. Somebody who is well known for his dedication and expertise, and someone who has helped countless doctors, including me, improve their careers so that we can help more patients. Thank you, Professor Azam and Mr. Ali, for being with us. आज का हमारा टॉपिक है हज एंड हेल्थ. एंड अरे वाह, हमारा पहला सलाम है राबिया उमेर जी से, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान. वेलकम राबिया, एंड इट्स गुड टू हैव यू ऑन द शो. प्रोफेसर आजम से शुरुआत करते हैं. प्रोफेसर आजम, टुडे वी हैव अ वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल लिसनिंग टू अस. हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तो सभी में ही बोल दीजिएगा ताकि मुझे ट्रांसलेट ना करना पड़े. आप अलहाजी हैं, आप हज पे कब गए थे सर? मैं पिछले साल मुझे शर्फ हासिल हुआ हज करने का 2022 में. एंड कैसा लगा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? व्हाट इज मतलब हम इंग्लिश में तो हम लफ्ज बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. एक्चुअली फीलिंग क्या आती है? उसके लफ्ज या वर्ड्स हैं क्या इंग्लिश में या उर्दू में एक्सप्लेन करने के? बहुत ही इट्स अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस. और आप वहाँ जाते हैं तो आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं खुदा से. और जो इस्लाम के 5 फ़राइज़ हैं उनमें से एक ये फ़र्ज़ भी है कि जिसके पास इतना पैसा हो जो हज के लिए जा सकता हो, तो उसके लिए लाइफ में एक बार वहाँ जाना हज फ़र्ज़ है. तो और ये मैं कहता हूँ कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी की चाहत होती है. वो ऐसा घर है जिसमें कहते हैं कि जब खुदा पाक चाहता है, जिसको चाहता है उसी को बुलाता है. तो मोर इम्पोर्टेंट देन मनी इट्स द विल which takes you there. It's your connection with the Almighty which takes you there.
तो इसलिए बहुत खुशखबरी की बात है जो लोग इस साल हज पे जा रहे हैं या जिनका इरादा है आगे जाने का, तो ये बहुत ही मुबारकबाद की बात है उनके लिए। हमारी तरफ से भी सबको मुबारक जो अब अगले हफ्ते से ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे, अपनी ट्रैवल शुरू करेंगे। एंड मिस्टर अली रेजा इज आल्सो विद अस। मिस्टर अली, व्हेन वर यू एबल टू गो टू द हज? Sir, I had traveled for Hajj in 2019, which was just before COVID. So after that, COVID was there, and there was no Hajj travel for anybody. But I was fortunate enough to have this journey in 2019. Just to share at the very start my experience, I totally agree with Professor Azam sir on his comments on what he felt when he was on Hajj. But to add to that, it was definitely a spiritual journey. But at the same time, a lot of learnings in terms of how committed you should be to what part you take, and how obedient you should be. So that is something are my learnings from the Hajj journey that I had in 2019. So that's how I would like to put it up as. तो कुछ एक कीवर्ड्स आ रहे हैं हमारे पैनलिस्ट से, हमारे गेस्ट से। एक तो था कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद गॉड। एंड ये दो तरफा कम्युनिकेशन है। अल्लाह आपको बुलाते हैं और आप जाते हैं, तो आप सुनते भी तो है ना, बट आपके कान भी तो ऐसे होने चाहिए कि आप अच्छी चीजें सुने। सो दैट फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। वी विल स्पीक अबाउट इट लेटर, प्रोफेसर आजम को पूछेंगे व्हाट कम्युनिकेशन मींस। एंड देन मिस्टर अली रजा ने बात की कमिटमेंट की। व्हाट लेवल ऑफ कमिटमेंट यू हैव व्हेन यू आर गोइंग, तो इसकी भी बात करते हैं। प्रोफेसर आजम, एक गुड इवनिंग आ रहा है आपको फ्रॉम प्रतीक मनवानी जी। एंड राजा प्रभाकर जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, आर देयर एनी लोकल रेगुलेशंस और गाइडलाइंस? तो इसको हम पढ़ेंगे लोकल फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड अलग से पढ़ेंगे लोकल फॉर सऊदी अरेबिया। आर देयर एनी लोकल रेगुलेशंस और गाइडलाइंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज? तो राजा जी, डायबिटीज पे बाद में आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जनरल हेल्थ। तो सर, जैसे आप प्री मेडिकल अप्रूवल देते हैं बिफोर पीपल गो फॉर हज, उसमें आप क्या क्या चीजें देखते हैं? हज जो है, जैसे मैंने कहा, इट्स इट्स अ वेरी डिवाइन डेस्टिनी और डिवाइन ट्रैवल, बट उसमें उसको एंजॉय करने के लिए आदमी को फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम प्री चेकअप करते हैं जाने वालों का, तो उसमें हम देखते हैं कि उनको जनरल जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं वो कैसी हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई और उनको इलनेस है कि नहीं, और हाउ वेल कंट्रोल्ड इट इज़। और साथ में उनकी जो है जनरल फिजिकल फिटनेस कैसी है, क्योंकि वहाँ पे एवरेज हज के दौरान अगर मैं कहूँ तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर रोज़ चलना पड़ता है। तो उसके लिए फिजिकली फिट होना भी ज़रूरी है। और उसके लिए यहाँ पर भी जब आप हज पे जा रहे हैं और आपका इरादा हो गया है या आपका नाम आ गया है हज के ट्रैवल लिस्ट में, तो आपको फिजिकली फिट भी होना है, और रोज़ यहाँ पर भी इंडिया में रह के या अपनी कंट्री में रह के चलने की कोशिश करनी है, और जिसे कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग की आदत डालनी है, ताकि वहाँ पर आप वो चल पाएँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जो भी पेशेंट को बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसकी मेडिकेशन ज़रूर ले जाएं अपने साथ, और प्रॉपर चेकलिस्ट बना के, प्रॉपर ट्रीटमेंट कार्ड बना के, जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, उनसे उनसे सब दवाएं प्रिस्क्राइब करा के ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे दवाएं मिलना मुश्किल भी होता है। और एक मतलब एक आम तौर पे गलतफहमी है जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, कि हम लोग जब हज पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे एवरीथिंग विल बी ओके एंड वी डोंट नीड एनी मेडिसिन, हमें कोई दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे सब सही रहेगा। पर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि अपना इलाज दवाओं से करना चाहिए। इसलिए अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, वो भी एक इबादत है। तो इसलिए दवाओं को भी साथ में लेके जाएं, जो दवाएं चल रही हैं, और सारे जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन हैं वो लेके जाएं, ताकि आप हज को एंजॉय कर पाएँ और अपने और हेल्दी रहें। So एक तो you must show the doctor, consult the doctor before going, take all the medicines and begin practicing. If you have to walk 8 to 10 kilometers, तो डॉक्टर आजम, जैसे आप तो हार्ट वाले पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, मान लो मैंने कभी सैर नहीं की, कभी एक्सरसाइज नहीं की, मैं एक ही दिन में कैन आई स्टार्ट रनिंग अ मैराथन? या आप कितने हफ्ते, कितने महीने हमें देते हैं टू बिल्ड अप आवर मसल्स एंड बिल्ड अप आवर टॉलरेंस टुवर्ड्स सर, एक्सरसाइज?
फॉर एवरेज 40 या 50 year old adult अगर आप बता दें, फॉर एन एवरेज पर्सन जिसने कभी एक्सरसाइज ना की हो। सर आमतौर पे जब भी डॉक्टर कालरा हज के लिस्ट में नाम आता है किसी का या कोई इरादा करता है, तो ही हैज़ अराउंड 2 months ऑफ टाइम, 1.5 to 2 months, जो कि एक बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है ग्रेजुअली बिल्डअप करने के लिए। स्टार्ट फ्रॉम 500 मीटर्स, ग्रेजुअली बिल्डअप। 8 से 10 किलोमीटर जो मैंने बताया ये तो अपर लिमिट है, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, टेक स्मॉल स्टेप्स डेली। यानी आप 500 मीटर से शुरू करें, धीरे धीरे बिल्डअप करें, और अ, अपना अच्छा फुटवियर लें। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस फुटवियर को आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वही फुटवियर वहाँ लेके जाएं। क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि आदमी हज ट्रैवल के लिए एक नया फुटवियर ले लेता है, जो सोचता है बहुत अच्छा होगा, और वहाँ पे जाके उसको तकलीफ होने लगती है उस फुटवियर में। तो इसलिए फुटवियर अच्छा हो ताकि आपके पैर प्रोटेक्टेड भी हों और आप चल भी पाएँ। और फुटवियर पहले ही लें और उसे घर पे ही पहने एक बार, ताकि जो भी दिक्कत है वो यहीं पे हो। एंड नो हार्म इन टेकिंग 2 or 3 पेयर्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन कीप ऑन चेंजिंग। बिल्कुल, जिनको बिल्कुल डॉक्टर डायबिटीज साहब। है या हार्ट की डिजीज या किडनी की डिजीज है, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शाम को जूते पहने, शाम को जूते खरीदें, दिन में ना खरीदें, क्योंकि शाम को पैर का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो जो जूता आपको सुबह फिट आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो शाम को भी फिट आएगा। तो शाम के टाइम आप नया जूता खरीदें, एंड इफ वी हैव 1 or 2 months, दैट इज एनफ टाइम टू बाय एंड आल्सो ट्राई द फुटवियर। सर, देयर इज अ सलाम फॉर यू फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल। डॉक्टर कमरुल हसन हैं, हमारे सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे। वो आपको वार्म ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। सो इट्स गुड टू सी ऑल द कंट्रीज यूनाइटेड टुगेदर। Mr. Alireza, now you're a young person, a handsome person, but what is the average age of people who travel to Hajj? Uh, the group, there are two ways of going to Hajj. One is through Hajj committee from India, and the second is private tours. So I went through private tours, and more than 70% of the population in the group which I had gone had, people with age more than 55, 60 years. So I was very fortunate that, sir, I did this Hajj at a very early age, being young. And my experience is that people should try and do this as early as possible, because if you want to enjoy that entire journey, which Professor Azam sir just mentioned about the kind of walking which needs to be done with the hot weather that Saudi Arabia has, the desert land which is there, it definitely requires a lot of strength and good health. So that is how important it is to do Hajj a little earlier in life, if granted by God, or made an effort from our side as well. So that's how the scenario was when I went. Professor Azam smile कर रहे हैं because Mr. Ali Reza is from the private sector. Azam साहब हमारे Indian government के employee हैं, तो it's about age and affordability both. So या affordability also defines कि आप कितनी जल्दी जा पाएंगे हज पे। बिल्कुल, बट इट्स अ आपने वेरी हीट पर्टिनेंट पॉइंट कि आदमी जल्दी जाए जल्दी जाए। व्हेन ही इज इन मिस्टर गुड हेल्थ। यस, उन्होंने बात की हीट की, बिकॉज इट्स हॉट वेदर। एंड नैना अग्रवाल मैडम है न्यू दिल्ली से, शी सेज एनी प्रिकॉशंस दैट यू टुक मिस्टर अली रजा, परहैप्स आप जवाब दे दें पहले, फिर डॉक्टर आजम को पूछते हैं, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज। So two things which I took, very good care of myself. First was to have a training session, because that was offered by the private tours, as to what are the realities on Hajj, because Hajj is a very difficult and long journey. So when I went there, there was a training program which was done by the tour operators as to what are the conditions, what things to be taken. So we may talk about training programs in organizations and all, and other places when you visit you may not have this, but that was something which was very useful in terms of what should I be taking, my typical glucon Ds, what is the amount of water should I be taking. So all those people who have already gone on Hajj, they had given their experiences over there, in terms of what kind of clothing should be taken over there, what kind of powders should be taken, when the powders can be applied. There are some times when you are wearing the ihram and you're going for Hajj, you cannot even apply a scented powder. So at those times, what should be done? So first is the knowledge, and the second is the resources that one should carry, which I definitely did before when I went in 2019.
Ihram is the traditional clothing that is worn. This is for Yes, sir. some of our people who may not be able to understand. It is the traditional clothing that is worn, separate for men, separate for women, when you are on pilgrimage. But ये मुझे नहीं पता था कि ये scented पाउडर भी कभी कभी नहीं लगा सकते थे. That I was not aware. Yes, yes. प्रोफेसर आजम इसमें कुछ ऐड करेंगे जो मिस्टर अली रजा ने कहा है. एक तो टेक गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स इन द सेंस पीपल जो पहले हज पे हो आए हैं, एंड दूसरा जो आपके टूर ऑपरेटर हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे. हमारे हरियाणा स्टेट के जो हज कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है मोहसिन चौधरी साहब. तो ये मुझे पता है कि इस साल उन्होंने भी ये चीज़ हरियाणा स्टेट में स्टार्ट की. एक पहले जो भी हमारे यात्री जा रहे हैं हरियाणा स्टेट की तरफ से सबको ट्रेनिंग दी जाएगी हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. Dr. Kalra, since it's the weather is very hot there, so the most important thing is you have to drink adequate amount of water. And in that, I will like to add that the best drink that helps in rehydration. That was my personal experience. Is take a lot of ORS along with you, and then you can take like matha or dahi, or there is a drink known as laban there. All of them contain salts, because when you are walking in dry hot weather, you'll sweat a lot. So it's very important to rehydrate yourself with water as well as salts. So take a lot of ORS along with you from India and from Pakistan, from wherever you are embarking for Hajj. And the clothing should be light, it should be easy to wear. And for keep a headscarf for male, because during the daytime the temperature is very high. And since there is very less pollution, and all the haram, that is Medina and Mecca, is made of white marbles, so there is a lot of reflection into your eyes. So always keep goggles. You have to have very good goggles, and if you are wearing spectacles, then you should have a photochromic glasses for yourself to make yourself comfortable. Otherwise, once you go outside your houses, outside your hotels, it will be very difficult to even see the roads. So it's so bright. So take care of your eyes for in regards with goggles, and have a headscarf. For the females, they can have a British hat that worn by a queen, the rounded hat, so that it helps them protect from the direct sunlight. And ये जो चीजें आप बता रहे हैं सर, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड नाउ आई सी द क्वेश्चंस कमिंग. यही वाले सवाल हैं जो लोगों को अब पूछने भी नहीं आएंगे. जैसे अब जब मुझे पता ही नहीं, मान लो मुझे कि वहां पे वाइट मार्बल है और रिफ्लेक्शन है, तो मेरे दिमाग में ही नहीं आएगा कि मैं फोटोक्रोमेटिक स्पेक्टिकल्स पहन के जाऊं या गॉगल्स पहन के जाऊं. तो वहां जाके जब पता चलेगा, बाय दैट टाइम इट्स टू लेट, बिकॉज घर पे जो चीजें हैं वो बहुत सस्ती हैं, दे आर वेरी इजीली अवेलेबल. सो एक तो जो आपका आई वियर है, दैट इज स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स, वो फोटोक्रोमेटिक होने चाहिए. दूसरा जो हेड स्कार्फ है, या लेडीज टोपी पहन सकती हैं, ब्रिटिश हैट. प्रोफेसर आजम, जो हमारे असम की टोपी है बड़ी वाली ऐसे वाली, वो एग्जैक्टली जा सकती है? हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल जा सकती है. बैम्बू वाली वो जा सकती है. सो या बिल्कुल. sudden indication for the Assamese topi, which everybody can take, and it is so easy to procure here. वहां पे मुश्किल आएगी, बल्कि वहां पे अगर हम सब लोग पहन के जाएं तो बाकी जत्थे भी देखेंगे कि जी इनकी टोपी इतनी सुंदर है, मुझे भी चाहिए असम से. आपने पानी की बात की, एंड वाटर, लेट मी रीइंफोर्स, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर 2-3 घंटे पे कुछ पीते रहें. ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्ट्स जो सर कह रहे हैं वो लेके जा सकते हैं. एक जो देसी नुस्खा है, दैट इज जलजीरा. तो जलजीरे के 1-1 रुपए के पैकेट आते हैं, वो अपनी जेब में डाल के ले जाएं. बड़े वाला लेके जाना है MDH मसाले का, वो भी ले जाएं फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स. बट इवन दोज 1 रुपी पैकेट्स जो लोकल कंपनी बनाते हैं, यू पुट लॉट्स ऑफ देम इन योर पॉकेट. एंड सपोजिंग somebody else is walking with you, you may or may not know him. अगर आपको दिखे कि उनको पसीना ज्यादा आ रहा है, तो एक जलजीरे का पैकेट उनको भी दे दें, इट विल हेल्प. हाउ वी एक्सप्लेन हेयर टू आवर पेशेंट्स इज, बिकॉज हमारे पेशेंट्स आते हैं वेस्टर्न यूपी से और हरियाणा से, नियर द यमुना रिवर. दे आर ऑल फार्मर्स. सो व्हाट वी टेल देम इज, देखो आपके घर में एनिमल्स हैं, काउज बफलोज हैं, आप उनको जो रॉक सॉल्ट है अनलिमिटेड देते हैं. सो इस टाइम पे the cows and buffaloes in our farms, they have access to unlimited salt, unlimited water. आप अपने एनिमल्स का तो ख्याल रखते हैं इतना, अपना रखना भूल जाते हैं कि आप वो नमक साथ ले जाना भूल जाते हैं. तो then they understand and then they take the salt with them. Sir, many questions coming up, and
this question from Samreen Fatima ji. She says, any dietary considerations or restrictions I should follow during Hajj? So, Mr. Ali, what kind of food is available? Vegetarian, non-vegetarian, halal food, and what is safe, what is hygienic, what is affordable? मैं क्या पैक करके लेके जाऊं घर से और क्या मैं वहां पे फ्रेश खरीदूं? So when I went on Hajj, what I could take from my home was small things like dates, dry fruits, which I took, which I could make small packets for. Dates are obviously available over there, but since I had them over here, I did take from there, take it so that I could have small snacks in between. Over there, since it's a desert land, most of the food which is coming over there is coming from outside. So hardly anything grows over there. So that is one very important peculiarity about Saudi. Over there, when you go with these tours, whether it is Hajj committee or even for private tours, what you have is definitely food arranged by the tour operators over there. So there is a mix of veg and non-veg both, but definitely there's a lot of red meat, even chicken, and carbohydrate-rich food. So the choice is yours, what to select and what not to select. But definitely choices are there, sir, in terms of food over there. डॉक्टर आजम कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? व्हाट इज हेल्दी, व्हाट इज अनहेल्दी, हार्ट और डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से? I must say that every food is available there. सारा खाना वहाँ पे मिलता है और इंडियन टेस्ट का मिलता है. इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के काफ़ी होटल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. और वहाँ पे जाके टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ वाटर. फ्रूट्स बहुत लेने हैं ताकि आपको आपका बाउल का जो डाइजेशन है वो भी सही रहे, कॉन्स्टिपेशन ना हो, और दैट हेल्प्स इन हेल्पिंग यू प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑल्सो. हमें कई लोग पूछते हैं कि डेट्स या खजूर खा सकते हैं कि नहीं. द आंसर इज यस, मॉडरेशन में ले सकते हैं. अब इकट्ठे 20 ना खाएं, पर बाकी वैसे सऊदी की डेट्स होती भी बड़ी स्वाद है. तो हमारे पेशेंट्स जब वापस आते हैं हज से और उम्रा से, तो मेरे लिए डेट्स लेके आते हैं, तो वो एक दिन में खत्म हो जाती हैं घर पे. बट यू कैन टेक वन डेट एट अ टाइम एंड थोड़ा सा उसको लुत्फ भी तो उठाएं ना. यू डोंट हैव टू पॉप इट ऑल इनटू योर माउथ एट वन टाइम. उसके 4-6 हिस्से करें, एंड दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग. जब आप वो डेट खा रहे हैं, वो एक डेट में कुल 22 कैलोरीज हैं. एक चौथाई चपाती, इट इज नॉट टू मच, इट्स जस्ट 22 कैलोरीज पर डेट. तो जब आप वो डेट खा रहे हैं, तो माइंडफुल ईटिंग मीन्स कि आप ऊपर वाले का, अल्लाह का को याद रखें, उनको थैंक यू करें कि आपने डेट बनाई. देखें, उन्होंने पहले पेड़ बनाया, सृष्टि बनाई, पेड़ बनाया, फिर पेड़ ने डेट उगाई, फिर हम तक पहुंची. सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन गेटिंग द डेट टू यू. तो उन सबको एक बार याद करें. वही जो 2-3 मिनट आपको लगेंगे याद करने में, उतने वो डेट हजम हो जाएगी एंड आपकी शुगर को कुछ नहीं होगा. So just in moderation and slowly. मतलब the point is slowly. एक और क्वेश्चन आ रहा है. पहला क्वेश्चन था समरीन फातिमा मैडम का, एंड वी होप फातिमा जी दैट यू आर एबल टू गो टू द हज दिस ईयर और सून, एंड वी ऑल प्रे फॉर यू. आई एम श्योर प्रोफेसर आजम एंड मिस्टर अली रजा विल बी प्रेइंग कि सब लोग जो इसे सुन रहे हैं, सब हज सब की ना हज की जो मनोकामना है वो कबूल हो. एंड एक और क्वेश्चन है सपना मैडम का. शी सेज डायबिटीज, हाइपरटेंशन जब होती है, तो प्रोफेसर आजम ने कहा कि दवाइयाँ लेके जाएं, बट वहाँ पे कितना कॉमन होगा कि किसी की शुगर लो हो गई ज़्यादा चलने की वजह से, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया ज़्यादा पसीना आने की वजह से. तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं क्या? व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू अस देयर? So the Saudi government makes a lot of efforts to have dispensary at very close by places. तो ऐसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, और फर्स्ट एड के लिए या ये कहिए कि कॉमन एलिमेंट्स के लिए तो बहुत सारा इलाज मौजूद है और आराम से हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, एट नो कॉस्ट. बट स्टिल वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. और वहाँ पे रेफरल हॉस्पिटल्स भी है इन केस द पेशेंट नीड्स some serious management for heart attack or he needs some surgery. So even the Saudi hospitals are equipped and well equipped, and they provide for you. एंड द अदर गुड थिंग इज, अगर आप साउथ एशिया से जा रहे हैं, तो 99% ऑफ द टाइम यू विल बी एबल टू फाइंड समबडी, अ डॉक्टर और अ नर्स, जो आपकी भाषा बोलते हो. तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा उस अस्पताल में जिसको बंगाली या उर्दू या हिंदी या गुजराती आती है. तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो आपके साथ And कम्युनिकेट कर. Sir, I interpreters would also just, are also there in the hospital. Who so are I would also just there? like to share. Yeah.
Dr. I Azam, was just saying the interpreters are also there. Suppose you interpreters do are there. not know the language, you know only Bengali, then interpreters are also there who help you in Right, getting the right. treatment, access to treatment. Yeah. Mr. Alireza? Yes, sir. I would just like to share one incident. There was one aged male member in the group, and he wanted some medical help. And I was fortunate enough to identify where the Hajj committee, group was there, and there were certain clinics which are set up by, the Hajj committee India over there for, Indians over there. So when I took that gentleman over there, definitely the treatment was done, but I was definitely very impressed by the number of uh, doctors and nurses which were there, and the kind of facility which was built up for Indians. So that was definitely a very good experience for me. So the staff over there was Indian. They were from Kerala, and the facilities were very good for the Indians over there, which was there in the Hajj committee building, which is there in Mecca. So that's my experience and information, sir. डॉक्टर आजम, आपका जो कॉलेज है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन द एंटायर कंट्री. आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं क्या इस मुहिम में? जी सर, गवर्नमेंट डॉक्टर्स डेपुटेशन पे और नर्सिंग स्टाफ एंड पैरामेडिकल स्टाफ जाता है सर. हमारे यहाँ से भी जाते हैं, सीनियर्स हमारे गए हैं कई बार. तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड एज डॉक्टर अली रजा इज सेइंग, बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं और कोई परेशान होने की बात नहीं है. सम थिंग्स वी कैन सजेस्ट इन जनरल. अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं या डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज और डायबिटीज, यदि आपकी अकस्टम्ड फिजिकल एक्टिविटी वही है जो हज के दौरान होगी, पहले भी आप 6 से 8 किलोमीटर सैर करते हैं रोज, हज में भी आप 8 से 10 किलोमीटर करेंगे, फिर आपकी मेडिसिन में कोई चेंज नहीं आएगा. दैट इज अ जनरल रूल. मगर घर पे तो आप कर रहे थे सैर 1 किलोमीटर 10 मिनट महज, सुबह शाम 1 किलोमीटर, दैट इज 10 मिनट सुबह शाम स्लो वॉकिंग. एंड हज पे जाके तेज चलना है, एंड 8 गुना आपकी सैर बढ़ने वाली है. देन सर्टनली द डोज ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन एंड द डोज ऑफ डायबिटीज मेडिसिन इज गोइंग टू फॉल. तो अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या सल्फोनाइल यूरिया, आप अपने डॉक्टर से बात करें. इट इज पॉसिबल कि आपकी दिन की डोज 50% हो जाए, क्योंकि आपको ज्यादा चलना पड़ रहा है. ऑल्सो अगर आप कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं जिसे डायूरेटिक कहते हैं, जिससे बाथरूम ज्यादा आता है, यूरिन ज्यादा आता है, तो या तो उसकी डोज आधी कर देंगे डॉक्टर आजम, डॉक्टर साहब इसके स्पेशलिस्ट हैं, या आपको ये कह सकते हैं वो कि आप रात को ले लें वो गोली. जब आप रात को सोते हैं तो तब गोली ले लें, तो एट द मोस्ट एक बार उठना पड़ेगा. So, Dr. Azam, from a diuretic point of view, blood pressure point of view, what is the pragmatic advice you would give to everybody who is listening to us? Yes, sir. A lot of cardiac patients are on diuretics, and as you suggested that the dose can be decreased, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गर्मी भी होती है और पसीना भी होगा, तो वाटर लॉस बॉडी से ऐसे भी बहुत हो रहा होता है. तो डाययूरेटिक की डोज कम कर देते हैं. और बजाय रात का, मैं कहूँगा रात में अगर डाययूरेटिक लेंगे तो फिर शायद उठना भी पड़े रात में वॉशरूम जाने के लिए, तो बेहतर है आप सुबह नाश्ते में ले लें. देन ड्यूरिंग द डे टाइम यू कैन कंट्रोल योर इनटेक ऑल्सो, कि आप उसके मुताबिक पानी भी पीते रहें. और सर्टेनली ब्लड प्रेशर की दवाएं भी कम हो जाएंगी, शुगर की दवाएं भी कम हो जाएंगी, बिकॉज अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड. मिस्टर अली, हाउ डू यू फील? एक तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई, so the medication requirement is less. दूसरा स्पिरिचुअल हेल्थ, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा होगा? आप एक ऐसे ही प्रोफेशन में है जहाँ पे 24 घंटे स्ट्रेस रहता है, और टारगेट्स और और अब अली रजा के बॉस लोग भी सुन रहे होंगे तो हम ज्यादा टीज भी नहीं कर सकते अली को. बट how does it feel, spiritual health and reduction in requirement for of medicines? Sir, definitely, managing stress is something which everybody needs to learn. So it's not only about, a job or a career or a business, but that is definitely everybody has to learn. So that is one way to deal with it. Second is meditation. That definitely I follow. So that is something which helps. Third is spirituality. That definitely increases my confidence level, my reliance that okay, everything will be good, everything will fall in place if I work hard and if I receive help as well from God. So that definitely improves my confidence and my intentions of moving forward.
So that definitely helps, whether it is work or whether it is health. So that's how I would like to answer that, sir. डॉक्टर आजम, आप एचओडी हैं और आप इतने सारे पेशेंट्स को दवाइयाँ भी देते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं। आप कोई एक्सपीरियंस आपके रीसेंट पास्ट में जब आपने देखा हो कि पेशेंट वाज मे बी वी फेल्ट दैट वी विल नॉट बी एबल टू सेव द पेशेंट, मगर स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग थी, स्पिरिचुअल बिलीफ पेशेंट में, पेशेंट की फैमिली में, द पेशेंट केम बैक, you know uh, anything that comes to your mind, how can we use spirituality and how can we use the Hajj pilgrimage? जैसे मैं ही हैप्पी फील कर रहा हूँ आप दोनों से बात करके, सबसे बात करके, सिर्फ बात करके ही हैप्पीनेस आ रही है, तो जो हज पे जाएंगे तो वो और ज्यादा हैप्पी होंगे। हाउ कैन वी हाउ कैन वी हार्नेस दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू गुड हेल्थ? एनी रियल लाइफ एग्जांपल? Certainly, the level of stress is very less once we are on Hajj pilgrim, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस का फैक्टर है मोबाइल, गेटिंग कॉल फ्रॉम एवरीवेयर, सो वो कम हो जाता है वहाँ पे, तो स्ट्रेस का लेवल बहुत कम होता है। दूसरी बात ये कि हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे होते हैं ऑलमाइटी से, तो उससे हम लोग को हमें अच्छे वाइब्स आते हैं, अच्छी फीलिंग आती है, और वी फील कि वॉट एवर इज हैपनिंग एंड वॉट एवर विल हैपन फॉर गुड। तो एक ये हमें हमारे बैक ऑफ द माइंड पे ये थॉट प्रोसेस रहता है। और जैसा आपने कहा कि ऐसा तो हम लोग रोज़ ही देखते हैं, जिसे आपने कहा चमत्कार की, मिरेकल्स कि बहुत बार ऐसा होता है जो पेशेंट बहुत सिक आता है, बट उसको इतना भरोसा होता है ऑलमाइटी पे, और हम लोग तो अपना काम करते हैं, लेकिन जो बचाने की ताकत है वो तो ऊपर वाले की है। तो हम अपना काम करते हैं और मरीज़ को बहुत ही भरोसा होता है कि मेरा मरीज़ अच्छा हो जाएगा, और मेरा फादर है या मेरे मदर है या मेरा बच्चा है, आई डू लॉट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरीज, तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि आप जैसा उम्मीद रखते हैं ऊपर वाले से, वैसा ही आपके साथ होता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे अपने बारे में या अपने बच्चे के बारे में या जिसकी भी सर्जरी हो रही है, और एज अ डॉक्टर, हर डॉक्टर मेहनत करता है अपने मरीज के लिए, तो अच्छा ही होता है आमतौर पर। ये डॉक्टर आजम या मिस्टर अली रजा, ये हदीस का कोट है क्या कि आई हैव गिवन यू अ मेडिसिन फॉर एवरी डिजीज एक्सेप्ट ओल्ड एज? ये कहाँ का कोटेशन है? हदीस का है? ये मैंने भी सुना है, लेकिन मैं इसको बहुत कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि हदीस है या किसी की सेइंग है, बट डेफिनेटली मेडिसिन Just I would इज like to अवेलेबल फॉर। elaborate. What I have read in this context is that there is medicine for every disease except death. So I've read it in this context. It's only that probably we do not know what is the medication for the same, but it definitely exists. So that's the explanation which I have read. So you find the right doctor. We have lots of people logged in today, and Professor Azam and Mr. Ali Reza, thank you from Professor Hamid Ashraf. ये endocrinology के head हैं AMU अलीगढ़ के. So he's thanking you for a great discussion and for making things so simple and happy for us. And एक बहुत सुंदर सा thank you आ रहा है from Somaliland. Somaliland is a country in the Horn of Africa near Saudi Arab, and आज उनका Independence Day है. So all of us we join our brothers and sisters from Somaliland in congratulating them on their Independence Day, 18th May. And we have with us Dr. Abdi Rahman, who is a diabetologist and endocrinologist there. So warm welcome to Dr. Abdi Rahman as well. He's listening in. And Dr. Abdi Rahman, if you've already been to the Hajj, we would have loved to have you on the show. Please share your experience with us in the chat box. And if you've not gone so far, we all pray that in the coming years you should be able to go on the pilgrimage. So it's good to have connections, and all the way from Somaliland and Saudi Arabia up till Bangladesh, it is just one world. We are all united together. सर एक क्वेश्चन आ रहा है प्रोफेसर आजम, अगर आप लेंगे. दिस इज फ्रॉम आदा अफशीन मैडम. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मच नीडेड टॉक. आपने बात की ऑफ हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, बट मेरे अम्मी को, शी इज 58 ईयर्स यंग. तो आधा देखो, मैंने आपकी इंग्लिश करेक्ट कर दी, 58 ईयर्स यंग है हमारे दीदी. शी इज suffering from knee, she lives with asthma. So any suggestions sir from an asthma point of view, what to do, what not to do? वहाँ पे pollution का status कैसा रहता है? Air
cleanliness कैसी है, and what advice would you give, madam? पोल्यूशन बहुत कम है वहाँ पे, एयर इज रियली प्रिस्टाइन देयर. So, but still, I advise to take all the asthma medications and wear mask there, because there's a lot of crowding is there. So even the Saudi government has advised advisories. They had issue advisories during Hajj and Umrah that it is better to wear mask, especially when you are going into the masjid in Medina and Mecca. So better to wear mask to prevent respiratory tract infections. So again, a very good information for us. So take many masks, and याद रखें कि मास्क को भी साफ रखना है आपने, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो. क्लॉथ मास्क ले जाएं, एंड हमने देखा है बहुत सुंदर सुंदर मास्क होती हैं विच आर मैच्ड आल्सो विद क्लोथ्स, तो वो ले जाएं, या सर्जिकल मास्क विल आल्सो डू. डॉक्टर हामिद अशरफ एड्स टू आवर डिस्कशन. ये जो सेइंग है, देयर इज अ क्योर फॉर एवरी डिजीज एक्सेप्ट ओल्ड एज एंड डेथ, दिस इज द सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. ये पैगंबर की सेइंग है. So thank you, Dr. Hamid. डॉक्टर राधिका सैनी जी एक सवाल पूछ रही हैं. आई थिंक मे बी डॉक्टर आजम वुड आंसर बेटर. सर, व्हाट मेडिकेशन एंड मेडिकल सप्लाईज कैन वी टेक? जैसे अब हमारे यहाँ दवाई चलती है एक दर्द की, उसका नाम है ट्रेमाडोल. वो दुबई में बैंड है बिकॉज इट कम्स इन ओपियोइड्स. तो अगर आपकी जेब में ट्रेमाडोल है, आप तो वेल मीनिंग वे में लेके गए क्योंकि आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने आपको लिखी थी फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी, बट वो दुबई में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, एंड देन यू एंड अप इन द रॉन्ग प्लेस. सो व्हाट आर द रूल्स फॉर सऊदी अरेबिया एंड फॉर मेडिकल सप्लाईज? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस? So usually they are not very strict with the Hajj persons who are going with the Hajj supplies, but you should keep the prescription of the prescribing doctor and along with you, especially outside when you are doing the check-in of your baggage, because at that point they might check your medications. Otherwise, there is not much problem if the drugs have been prescribed and you have taken that in appropriate quantity. Suppose you have taken tramadol, just one strip of it or two strip of it, that is okay. But if you have kept 50 strips of it, then anyone can become suspicious. You can also talk with your doctor, and आपके डॉक्टर आपको पता करके बता देंगे because there will be websites. And अब जैसे for example, अब मुझे नहीं पता कि ट्रेमाडोल सऊदी अरेबिया में allowed है कि नहीं, but I know I can find out. So it will be easier for your doctor to find out instead of you trying to get the information. Sir, more questions coming up. And Mr. Alireza, you had alluded to this, to spirituality. So ये प्रिया सुहासिनी जी मैडम पूछ रही हैं, how can pilgrims prepare themselves physically and mentally and emotionally for the demands of Hajj? Yeah. So, sir, how I would like to, mention my answer over here. Physically, definitely, practice as Professor Azam sir said about, having a practice of walking for 7 to 8 kilometers before you prepare for Hajj. So it's not only about packing your bags, but definitely guiding yourself and the people going along with you to have that practice, so that it is a part of your routine for at least some time. From the emotional front and spiritual front, usually people say that, okay, if I want to get spiritual, I need silence with me and I need to be in a very silent space. But when you go for Hajj, you have lakhs of people with you. So to disconnect from the environment and connect with Allah over there is definitely takes a lot of effort. So that is something which people should try and practice first at home, and there be very cautious as to why they are there, and be very indifferent from the environment and try to connect to God over there. So that's my answer, sir. And the same environment, you can use it as a strength. So many people are there for the same purpose. So when you look at that, and then फिर इंसानियत है that everybody is human being, everybody is connecting for the same thing, तो आप उनसे strength draw कर सकते हैं. Let us say you see someone who is elder to you, someone who is more frail than you, and वो भी तो हज पे आए हुए हैं. The physical difficulties are more. You see somebody who is not as well off as you, and you can make out, तो वो भी तो आए हुए हैं, हालांकि फाइनेंशियल इशू था, बट दे मैनेज्ड. एंड व्हेन यू सी दैट, यू गेट इंस्पायर्ड कि बाकी लोग भी ये कम काम कर रहे हैं,
एंड मैं भी करूं, एंड देन यू प्रे फॉर हेल्थ एंड हार्मनी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड देन इफ एवरीबडी प्रेज फॉर द सेम थिंग, तो फिर ऊपर वाला क्यों नहीं सुनेगा? सो व्हेन यू यूज दैट काइंड ऑफ अ थिंग, and then if you let us say Ali is praying alone, maybe the impact will be different, but if so many lakhs of people are praying together, then the impact will be many lakh fold. एक Sir, क्वेश्चन आ I रहा would है। like to add या something यस सर। just हाँ। मैं कह रहा जैसे कि ये जो हज का सफ़र है, इसको मैं कहूँगा ये मोहब्बत और इश्क का सफ़र है। इट इज़ एक्चुअली द लव बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर। तो इसलिए इसमें अगर हम सफ़र की जैसे तैयारी कर रहे हैं तो हम खुश होकर तैयारी करें और अच्छी उम्मीद से तैयारी करें कि सब कुछ अच्छा रहेगा। और वहाँ पे अगर हमें तकलीफ़ें भी हों, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कितना भी इंतज़ाम कर ले, इफ़ 25 lakhs पीपल आर रीचिंग देयर एट अ टाइम, देन देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स। सो हम उसको जैसे हम अपनी ट्रैवल प्लान करते हैं और हम कहीं वेकेशन पे जाते हैं, तो डिस्पाइट आवर ऑल ऑफ आवर प्लानिंग, वी स्टिल हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज देयर। तो सिमिलरली वी आर गोइंग ऑन हज पिलग्रिम, तो ये तो मोहब्बत और इश्क का सफ़र है। इसमें अगर कोई परेशानी हो तो उसे खुशी से बर्दाश्त करें। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे जो शेयरिंग इज़ केयरिंग की बात हम लोग करते हैं, वो रियल सेंस में हमें अप्लाई करने का और देखने का भी मौका मिलता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चीज़ें तो उन्होंने बहुत इंतज़ाम कर रखी है गवर्नमेंट ने वहाँ के, लेकिन चूँकि इतनी सारी भीड़ है, तो थोड़ा अगर हम सब्र करें और जैसे आप सजेस्ट करें कि जो फ्रेल हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बूढ़े हैं, अगर हम उनको पहले उनकी हेल्प कर दें, उनको रास्ता दिखा दें और उनको उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ में उनकी मदद कर दें, तो हज का जो असल फुलफिलमेंट है वो हमें हासिल होगा। यस, दैट इज वेरी वेल सेड सर, एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग ऑफ दिस कि आप क्यों जा रहे हैं, पर्पस क्या है, और उसको आप कैसे, I don't know the word to use now, but how do you actually fulfill your responsibility as a responsible human being? वो सर हमें सिखा रहे हैं। सर कुछ एक मेडिकल सवाल है। एक तो सवाल आ रहा है फ्रॉम श्रद्धा इंडस्ट्रीज। ऐसे कोई रूल्स हैं क्या कि किसी को डायबिटीज है प्लस किडनी डिजीज है, या बाईपास सर्जरी अभी हुई है 6-8 हफ्ते पहले, तो वो लोग हज पे ना जाएं और अगले साल तक पोस्टपोन कर दें अपना? ऐसे कोई डेफिनेट रूल्स होते हैं इन क्रॉनिक डिजीज वेयर यू एडवाइज द इंडिविजुअल के सर इस बार आप ना जाएं, लेट अस हेल्प यू इम्प्रूव योर हेल्थ, एंड अगले साल आप चले जाना? अगर कोई भी क्रॉनिक डिसीज है एंड इफ इट इज कंट्रोल्ड एंड द पर्सन इज फिजिकली फिट, then he can surely embark upon the journey of Hajj. But like suppose the patient is on dialysis or he had recently had some major surgery, so it is better to avoid the travel currently, and then he will have to make a lot of preparations, and then only he should go once he is medically fit. एक और मेडिकल क्वेश्चन है, मिस्टर अली रेजा से पूछते हैं। मेनी ऑफ आवर पेशेंट्स हैव गॉट डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो उनको पता नहीं चलता कि गर्म है सर्द है, तो अगर आप नंगे पांव चलेंगे बहुत देर, या आप गर्म फर्श पे चलेंगे, तो जलने का चांस है। इट्स कॉल्ड पिलग्रिम्स फुट। So what are the chances of this happening during Hajj? And of course, Dr. Azam said that you should take the right footwear with you. Any other suggestions how to protect your feet while you're on pilgrimage? Sir, there are my experience over there that there are definitely various places where water is available to wash the feet. That is one thing. So the water is not scarce in spite of that being a desert land, but there are equal arrangements made wherever you go. So that is one very important thing. Secondly, when people are walking, there are different places to rest in terms of if you are old aged or if you are in a group, there are tents available, there are areas available where people can rest. So this is my experience, sir, that these two things are definitely there. Apart from that, as Professor Azam sir talked about, the right footwear, right socks is something people usually practice over there in terms of caring for their feet. So that's what I have seen, sir. तो जूते या सैंडल के अलावा सॉक्स भी यूज कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज है या इडीमा है, पैरों में सूजन है, आपको डायबिटीज सॉक्स मिल जाएंगी। अब ये बहुत महंगी होती हैं, यू एक्चुअली डोंट नीड टू बाय देम। आप सिंपल कॉटन सॉक्स खरीद लें और खूब सारे जोड़े खरीद के ले जाएं, और उसका टाइट इलास्टिक ना हो।
बिल्कुल ढीला ढीला सा हो, आप फैशन परेड पे नहीं जा रहे। सो यू वेयर सिंपल कॉटन सॉक्स जो बहुत टाइट ना हो, तो पैरों में सोजिश नहीं होगी। और जो जैसे मिस्टर अली ने कहा कि रेस्ट करने का मौका है, तो एक एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड मतलब कि मैं तेजी से चल रहा हूँ, तो आप बहुत तेजी से चलते हैं, यू डू नॉट पेस योरसेल्फ, आप पेसिंग नहीं करते, आप कुछ टाइम के बाद थक जाते हैं, फिर आपको ज्यादा देर रेस्ट करना पड़ता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज स्पीड इन द राइट डायरेक्शन। और हमें पता है कि प्रोफेसर आजम ने खुद तो चल फिजिक्स में जितने भी नंबर आए थे, अब बिटिया को पढ़ा रहे हैं वो, सो अब डॉक्टर साहब भी सीख रहे हैं अब स्पीड एंड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी मींस एंड पेसिंग मींस कि यू वॉक देन यू रेस्ट, यू वॉक देन यू रेस्ट, एंड देयर इज लॉट ऑफ टाइम टू डू द पिलग्रिमेज, एंड यू आर नॉट गोइंग टू विन अ ओलंपिक रेस। मतलब वो चीज निकाल दें और आप माइंडफुल वॉकिंग करें, माइंडफुल पिलग्रिमेज करें, जल्दबाजी ना करें। एंड देन द फुटवियर एंड द सॉक्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। डॉक्टर आजम, वन मोर क्वेश्चन, ये है रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। मुझे कोई भी कागज पत्तर लेके जाना पड़ेगा क्या? एक तो आपने कहा कि आई शुड टेक माय प्रिस्क्रिप्शन, माय डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, बट कोविड वैक्सीन, न्यूमोकॉकल, इन्फ्लुएंजा, व्हाट आर द जनरल रूल्स दैट वी शुड फॉलो? So the Hajj committee of that state or that city will arrange for vaccinations prior to the embarkation, and COVID vaccination is always better to have 2 doses of COVID vaccination. Usually अभी तो इतने restrictions नहीं है, आमतौर पे लोग चेक नहीं करते हैं, बट अगर कभी कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो वो चेक कर लेते हैं, तो बेहतर है आप कोविड वैक्सीनेशन 2 डोजेस करवा के जाएं, और बाकी रूटीन वैक्सीनेशन तो हज कमेटी ऑफ इंडिया खुद अरेंज करती है। कर लो, ठीक है। एंड आई एम श्योर बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ये रूल्स होंगे, तो जो भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वहाँ पे वैक्सीनेशन जरूर दी जाती होगी। साकिब अब्दुल साहब का एक क्वेश्चन है अबाउट डिहाइड्रेशन। तो आपने बात तो की थी कि पानी पीते रहें, ओआरएस लें, और हमने जलजीरे की भी बात की थी। मगर अब्दुल साहब पूछते हैं कि अगर डायबिटीज हो साथ में, तो फिर हम कैसे हैंडल करें हाइड्रेशन Then in एंड? yeah, यस। then in that case we can take salty water. We can take the common salt or the table salt along with potassium. That the fruits are very rich in potassium, like pineapple or coconut juice. So all these are commercially available also, और fruits के फॉर्म में भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो जैसे भी आप चाहें वैसे आप ले सकते हैं, तो उससे आपको पोटेशियम मिल जाएगा। और कॉमन सॉल्ट तो अवेलेबल है वाइडली, कॉमन सॉल्ट ले लें। लेमन है, अगेन इट कंटेन्स लॉट ऑफ पोटेशियम। सो इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। एंड जो जलजीरा कहा, जब आप पाउडर वाला लेते हैं उसमें ना के बराबर चीनी होती है। सो इफ यू टेक अ फ्यू पैकेट्स ऑफ जलजीरा एवरी डे वाइल ऑन पिलग्रिमेज, वो जो भी नमक या चीनी जो थोड़ा सा चला गया वो पसीने में निकल ही जाएगा। सो दैट इज अ सेफ ऑल्टरनेटिव एक्चुअली, एंड इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव। दैट इज व्हाई वी टेल आवर पेशेंट्स रिपीटेडली, एंड दे आर वेरी हैप्पी यूजिंग इट। देर आर सो मेनी क्वेश्चंस टुडे। डॉक्टर आजम, मिस्टर अलीरजा, के मेटॉक्स रोज होता है, सबकी सेवा में हाजिर होते हैं, और मैं मंडे और थर्सडे ये प्रोग्राम होस्ट करता हूँ। मगर इतने सवाल मैंने पहले कभी नहीं देखे। एंड व्हेन वी टुक अप दिस टॉपिक वी वर आल्सो वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस वी विल गेट, बट जितना रिस्पांस है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। नाउ आई एम फीलिंग दैट वी शुड हैव डन इट 1 मंथ अर्लियर आल्सो। हाइजीन की बात की, एंड आई अपोलोजाइज कि सबके नाम नहीं ले पा रहा जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। चंद्रशेखर हरिनारायण पूछते हैं, पेशेंट्स हु आर हाईली डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव, तो अगर अनकंट्रोल्ड है इट वुड बी अ गुड आइडिया नॉट टू गो, बट यू हैव 2 मंथ्स। जब आपको पता चलता है, लाइक डॉक्टर आजम सेड, व्हेन यू गेट टू नो कि आपका नाम आ गया लिस्ट में, यू हैव 2 मंथ्स। सो 2 मंथ्स इज अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट कंट्रोल्ड। रोज डॉक्टर के पास जाएं, उनका सर खाएं, उनको कच्चा चबाएं। और डॉक्टर हामिद, अगर आप अलीगढ़ में हैं तो डॉक्टर हामिद अशरफ के यहाँ जाके आप धरना दे दें कि बस मेरी शुगर और बीपी ठीक करो सर, तो मेरे को हज पे जाना है, एंड ही विल डू इट हैप्पीली। बहुत खुशी से करेंगे वो। सैयद शाकिल अहमद साहब एक सवाल पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम हिज साइड टू बोथ ऑफ यू, ग्रेट सेशन एंड थैंक यू टू मेड टॉक्स, एंड थैंक यू टू मिस्टर अली रजा एंड प्रोफेसर आजम फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, इनका सवाल है सैयद साहब का, एक्सरसाइजेस फॉर ब्लड प्रेशर। डॉक्टर आजम, वुड यू लाइक टू टेक दिस? मुझे यस ब्लड सर। प्रेशर है, हज के दौरान भी मैनेज करना चाहता हूँ, पैदल तो चलना पड़ेगा, इसके अलावा व्हाट एल्स कैन आई डू टू कीप माय cardiovascular health intact? I think you will not need any other exercise, because walking will be a good enough exercise for you. And apart from that, namaz is also an exercise.
So you'll get ample amount of time to offer a lot of nafil namaz, nafil prayers there. So if you are active there, then I don't think you'll need any other exercise apart from that, except when if you have some osteoarthritis or something like that, and your physiotherapist or your orthopedic surgeon has advised you certain exercises, then you should certainly do that. But apart from that, for a healthy person, if you are walking for this long distance, then you won't need any other exercise. डॉक्टर आजम, मिस्टर अली रजा, आपको एक तो थैंक यू सोमालीलैंड से फिर आ रहा है फ्रॉम डॉक्टर अब्दी रहमान हुसैन, द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंड एक आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्रॉम वन ऑफ आवर सीनियर मोस्ट डायबिटोलॉजिस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट, फ्रॉम डॉक्टर फातिमा जावेद मैडम. मैडम इज फ्रॉम कराची. मैडम इज 80 years यंग, एंड मैडम इज एडिटर ऑफ JPMA, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन. और जितनी मेहनत पिछले दशकों में, पिछले डेकेड्स में डॉक्टर फातिमा जावेद एंड जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने की है to spread awareness about Ramadan health, और किसी ने भी नहीं की पूरी दुनिया में. And Madam sends you her blessings and best wishes to both of you. Thank you. Shukriya. I have spoken about Dr. Fatima Javed Madam to Mr. Ali Reza in the past, and Madam specifies for socks, thick material socks are recommended. So thick cotton would be the best. And blessings also Ankle, for you lot of from ankle socks are also available in the market, sir. Anji. That can Ankle socks and thick material. And thank you, Dr. Javed Madam, for joining us. आपने ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लगता है. केदार जोशी जी हैं हमारे सीनियर सुनने वाले. सर इज 70 years यंग. सर भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं दोनों को. एंड गुड चॉइस ऑफ टॉपिक इज सेइंग. डॉक्टर आजम, 50 minutes हो गए और पता ही नहीं चला ये कौन सी मूवी का गाना है ये उर्दू में, कि जब आप दोस्तों के साथ होते हैं, चाहने वालों के साथ, तो टाइम का पता ही नहीं चलता. और सपोजिंग मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ डॉक्टर आजम के यहाँ कार्डियोलॉजी में, फिर तो हर 2-2 मिनट भी ऐसे खत्म ही नहीं होते अगर सर इंटरव्यू ले रहे हो हमारी. बट इट्स बिन ग्रेट हैविंग यू. हमारा आज का टॉपिक था हेल्थ एंड हज, एंड आई थिंक इट इज अ लिमिटलेस टॉपिक. यदि हम अगर हम बात करना चाहें हज के बेनिफिट्स की, तो आप उनको लफ्जों में, शब्दों में, वर्ड्स में, यू कैन नॉट इनकैप्सुलेट इट इन अ फ्यू वर्ड्स. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब. एंड इसी तरह से ही जब हम बात करना चाहें हेल्थ एंड हज की, how to take care of yourself, it is something that is ongoing, that will continue. But at least we've made a beginning, and there are so many nice things that have come out. जो शाकिल अहमद साहब ने क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब देखें डॉक्टर आजम ने क्या कहा. He said the walking itself is enough exercise, the spirituality is good exercise, but along with that you have the namaz, which is equivalent of aerobic exercise, and that should suffice. What would be more important would be preparing for Hajj. तो ऐसा नहीं कि आप हज पे जाके ही एक्सरसाइज शुरू करेंगे. पहले भी तो मौलवी साहब मुहूर्त निकाल सकते हैं ना, तो 2 महीने पहले से ही आप वर्जिश करनी शुरू कर दें. एंड देन when you've done the pilgrimage, when you've completed, when you've come back, then what happens, Mr. Ali Reza? Then what happens to spirituality and health and harmony and happiness, and how do you adjust to life in Mumbai after that? What did you do? What should you do? What will you do next year when you go on Hajj next year and then come back? So definitely, once you come back, the journey is very impactful. So once I came back, the level of spirituality, whatever lessons I learned, and whatever experience I had was definitely there for a long, long time. Uh, but as we say that once you again start getting into the routine, your routine life, your routine job, it tends to go away. But one needs to be cautious, and definitely I was a little more cautious because I wanted to carry that moment with me which I had spent in Hajj. So I keep reminding myself and being more cautious that whatever spirituality I gained after coming from Hajj remains with me. So there were certain bad things which you probably decide that okay, fine, once I come from Hajj or I finish my Hajj, I won't do this. So definitely you need to be obedient in that sense also, to keep the impact on the effect of Hajj continue with you for a long, long time. So आपने that's my experience. कमिटमेंट के साथ ओबीडियंस भी वर्ड यूज किया था, एंड यू यूज्ड इट ट्वाइस. तो एक पर्सनल क्वेश्चन मिस्टर अली, आज के केके मेट टॉक शो का आपकी पर्सनल हेल्थ पे कोई पोटेंशियल इम्पैक्ट? I was asthmatic for a long, long time myself, and there were certain triggers which I had
in terms of uh, leading to asthma. And once I stopped that when I went for Hajj, and after coming back, I did continue that. So definitely, that is one thing which has helped me, which I decided to not do it at Hajj, and not doing it even after Hajj, which has definitely improved my condition of health as far as asthma is concerned. So that is one example, sir, which I could give over here as a traveler, and as somebody who's managed asthma even after that. Dr. Azam will join me in saying shabash to you, I think, Chote bhai. Dr. Azam, आपके comments and impact on personal health going to Hajj. सर मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसा सफ़र है कि हर सफ़र पे जब जाता है आदमी, चाहे वो कितनी भी अच्छी जगह जाए, तो वहाँ से कुछ दिनों बाद आपको आने का मन करने लगता है, अपने घर को देखने का, अपने बेडरूम को देखने का, अपने कोलीग्स में वापस आने का मन करता है। पर हज एक ऐसा सफ़र है कि आदमी जब वापस आता है तो वो रोता हुआ वापस आता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अपने घर और अपने ख़ानदान में आने का मन नहीं कर रहा होता है। वहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी है, जो डिविनिटी है, उसको हमेशा मिस करता है, लाइफ लॉन्ग मिस करता है वो। और जैसे कि डॉक्टर अली रज़ा ने कहा कि हज बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और एक मौका है आपको कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव चीज़ों के लिए बदलें। जो आपके बैड हैबिट्स थे उनको छोड़ें, जो पर्सनैलिटी में आपके बैड ट्रेट्स थे उनको छोड़ें और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, है ना? और यानी ये एक इट्स अ लाइफ चेंजिंग जर्नी। हज इज़ अ लाइफ चेंजिंग जर्नी। और अगर हम वाकई में इसके मानों को माने तो ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि जब आप हज पे जाते हैं तो आपको हर रेस क्रीड के लोग मिलते हैं आपके बगल में। यानी चाइना के लोग भी होंगे, जापान के लोग भी होंगे, मलेशिया के भी होंगे, अफ्रीका के मुल्क के लोग होंगे, इंडिया पाकिस्तान के लोग होंगे, और हर हर मुल्क के, हर कंट्री के लोग होंगे। तो इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। और जो हमारी हज की ड्रेस कोड है वो बेसिकली इक्वालिटी दिखाती है कि जो दो कपड़े बांधते हैं हम, तो वो दो कपड़े बेसिकली इसकी याद दिलाती है कि जब आप मर जाएंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जब आप कब्र में रखे जाएंगे तो आपके पास यही दो कपड़े जाएंगे। जो दुनिया की ऐश है, दुनिया के नाम है, दुनिया की चीज़ें हैं, वो सब यही छूट जाएंगी। तो एक सेंस ऑफ इक्वालिटी और सेंस ऑफ नथिंगनेस आती है कि आप बहुत छोटे से हो इस यूनिवर्स में। तो यू फील मोर हम्बल, you become a better person there. So commitment, obedience, humility, health एंड कम्युनिकेशन विद गॉड, ये कुछ एक कीवर्ड्स आ जाए हैं। और इसके अलावा जो कंटिन्यूस जो डिस्कशन हुई है अबाउट हेल्थ, एंड इतने सिंपल सिंपल अल्फाज में, बहुत आसान अल्फाज में डॉक्टर आजम ने और मिस्टर अली रज़ा ने हमें चीज़ें बताई। आई एक्चुअली आई हैव नेवर बिन, बट आई हैव द फीलिंग दैट आई एम देयर। मतलब इतनी प्यारी पिक्चर पेंट की गई कि मुझे खुद को वो स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है, पॉजिटिविटी की। डॉक्टर फातिमा जावेद के वर्ड्स पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू एंड माय वार्म रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ यू. This is an excellent service that you all are providing. So, Professor Azam and Mr. Alireza, thank you very much for the service that you have provided to humankind today. And keep it up and God bless you all. इन लफ्ज़ों के साथ गॉड ब्लेस यू ऑल जो मैडम से हैं, पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे प्रोफेसर आजम को एनी टेक होम मैसेज फॉर एवरीवन बिफोर वी कंक्लूड टुडे. सर, वी हैव पीपल फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम Middle East, and from South Asian subcontinent. In English and Urdu both, sir. Take home message for everyone who is logged in. मैं यही कहूँगा कि ये सफ़र जो है वो ज़िंदगी का बहुत अहम सफ़र है, इसलिए इसकी तैयारी करनी है और इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। तो अपने यहाँ सेहत का ख्याल रखना है, जो आपकी दवाएं चल रही हैं वो लेकर जाना है, वरना अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही बरती और वहाँ जाके आप बीमार पड़ गए, तो फिर आपका जो हज है, इसके लिए आपने सारी परेशानी उठाई है और आपने इतना वक्त निकाला, वो आप सही से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सही से कर नहीं पाएंगे। So I advise all the pilgrims embarking upon Hajj to take their medications along with them, to take their health very seriously, and if they take regular medications, if they take all the precautions, then they will be able to really enjoy this journey, and they will return back a better person and in good health. Thank you, sir. Take home from Dr. Fatima Javed, madam, is it is a strong belief that if your Hajj is accepted,
you will have some change in yourself after returning from Hajj. So find the change in yourself. Mr. Ali, last comments from take home from your side in English and in Mumbaikar Bhasha, both. यस सर, व्हाई नॉट। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो भी हज पे जाते हैं, एंड पीपल शुड एक्सपेक्ट चेंजेस, मेक चेंजेस, एंड जब आप रिटर्न आओ तो डेफिनेटली यू शुड कैरी ऑन विद दोज चेंजेस एंड make a difference in your life and difference in life of your family members as well. So that is something is one of my experiences के changes आते हैं, and positive changes बहुत सारे आते हैं। Last thing sir, if you allow me, there is one observation which I missed जो मैं share करना चाहूँगा। When I was at Hajj, I saw a group of Indonesian Hajis over there. They were in groups, and one of the Hajis over there had a purple color band around his arm. So I just inquired over there कि ये band क्या है? Why is he wearing it? And one of those people who knew English told me that he's a patient of epilepsy, and that is why he's wearing that band. So taking some learnings from that, uh, Indian patients or South Asian patients where diabetes prevalence and cardiac disease prevalence is very high, such kind of initiatives can be for practiced of taking tying those bands and having extra care for them. So that is one of my observations which I thought I should share with my final message. That is a very good message, and I together we have the power to do this also. So we can speak with Mr. Mohsin Chaudhary Sahib, जो हमारे हरियाणा स्टेट के चेयरपर्सन हैं, and I am sure he will speak with the other people. And हमारी जो मिनिस्टर मैडम है, मैडम समृति ईरानी जो हैंडल करती हैं इनको, they will be very happy to do this. So we can do it for diabetes and for cardiology also. And then when Dr. Azam is there, so I mean, easily it can be done. And we still have a few days, at least in a small way, we can do it this year. And then अगले साल से तो बहुत ही वेल प्लान्ड वे में हो जाएगा. It's a very good suggestion. Thank you, Ali, for sharing this. And then ये फिर that is for Mr. Abdi Rahman. So you see, in India, we are not very good at arithmetic. So we do say that we gave 0 to the world, and the Arab people, they took 1, 2, 3, 0 from us. So हमारे यहाँ 1 plus 1 is equal to 11. It's not equal to 2. And I think that is the power we've seen of today's panel. Everyone getting together, 1 plus 1 becomes 11. So we learn so much from each other. And Dr. Abdi Rahman will be laughing at us and our arithmetic prowess now. But we have with us backstage Shrishti and Faraz. So Shrishti, Faraz, could you please show a certificate of appreciation for Professor Muhammad Azam Haseen from Aligarh? Thank you, sir, for having been with us today. Thank you so much. आपका आपकी जो तालीम है, जो तरबियत है, जो तजुर्बा है, your education, your training, your experience, thank you for having shared that with us. A certificate of appreciation. कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ जी. नहीं, बस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे केके टॉक के जरिए मौका मिला अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का. शुक्रिया हम सबकी तरफ से है सर. And Faraz, a certificate of appreciation for Mr. Alireza Doctor as well, please. So Mr. Ali, we appreciate the experience, the energy, the enthusiasm that you have brought to our panel today, and sharing how Hajj made you a better person. I think that has inspired all of us कि हम भी अब better इंसान बने, बेहतर इंसान बने. Thank you, sir. It was definitely a pleasure coming over here and sharing my experience. Thank you so much for the opportunity. सबको शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी कहेंगे for having been with us today. KK Med Talks is there daily, and like I said, Monday, Thursday हम होते हैं. I will be back with you now next Thursday. अगले मंडे के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं KK Med Talks नहीं कर पाऊँगा. बट बहुत अच्छा लगता है सबको मिलके. And to everyone from across the world, those of you who are traveling this year to the Hajj, एक बहुत fulfilling, एक बहुत spiritually meaningful Hajj आपको नसीब हो, and may you come back healthy. And for those who will be traveling in the coming few years, all the best for that as well. Thank you everybody, and we look forward to meeting you again. Jai Hind. Thank you, Jay.